वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर दिए गए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के ऊपर एक क्वेश्चन को टेकअप करेंगे। दिस इज पार्ट नंबर 2। आइएगा मूव करते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के ऊपर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। ABC Limited sells the total number of units, that is 20,000. Selling price per unit is rupees 28. Variable cost per unit is rupees 14. Fixed cost is 50,000 rupees. Because of increase in the cost, the management is considering either to increase in sales quantity or to increase the selling price. You are required to calculate A. New sales quantity and B. New selling price to maintain the same amount of profit when increase in fixed cost is by rupees 10,000. सो हमें इन दिए गए फैक्ट्स के बेस के ऊपर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम ये ए और बी पॉइंट को टेकअप करेंगे। इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग को पहले ही कर दिया। आइएगा मूव करते हैं आंसर के पार्ट के ऊपर। सो यहाँ पर हमें एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड को टेकअप कर रहा हूँ। यूनिट्स सोल्ड, दिस इज इक्वल्स टू 20,000। जिन सेल्स को मैं यूज करूंगा उसका रेफरेंस मैं आपको राइट साइड के ऊपर देता हुआ चलूंगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, this is equals to 28 rupees. Variable cost per unit, this is equals to 14 rupees. Contribution per unit, this comes to 28 rupees minus 14 rupees. This comes to rupees 14. Now I calculate the total contribution. This is equals to units sold multiplied with contribution per unit. Now the fixed cost, this is equals to 50,000. स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है there is increase in the fixed cost by rupees 10,000. So मैं इसको भी यहां पर लिख देता हूं। Increase in fixed cost, this is equals to 10,000. जिस सेल को मैंने यहां पे रेफर किया है उसका रेफरेंस मैंने दे दिया। Now I calculate the profit. This is equals to total contribution minus fixed cost. स्टूडेंट, यहां पर हमने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया 2,30,000 रुपीज। अब इसके बेस के ऊपर हम आगे का फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ आई मूव ऑन टू द रिक्वायरमेंट पार्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ए न्यू सेल्स क्वांटिटी। सो मैं इस ए पॉइंट को ले रहा हूं। न्यू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड टू मेंटेन प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्रीज बाय रुपीज 10,000. आई राइट हियर desired profit, this is equals to 2,30,000 rupees. Add fixed cost, this is equals to previous fixed cost, that is 50,000 rupees, plus increase in the fixed cost, that is 10,000 rupees. This comes to 60,000 rupees. Now the total contribution, this is equals to desired profit plus fixed cost. It comes to 2,90,000 rupees. Now I calculate the contribution per unit.
This is equals to contribution per unit, rupees 14. Now we can calculate the required number of sales units. Total contribution divided by contribution per unit. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स यूनिट आ गए 20,714 डेसिमल 28571. मैं इस डेसिमल को रिमूव कर रहा हूं. So the required number of sales units when the fixed cost is increased by 10,000 rupees, it comes to 20,714. अगर हम एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ प्रॉफिट को मेंटेन करते हैं और उसके साथ फिक्स कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाती है तो अब हमें 20,714 यूनिट्स को बेचना होगा. नाउ आई मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, बी पार्ट. न्यू सेलिंग प्राइस टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट इज बाय रुपीज 10,000. सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहां पर टोटल सेल्स को जानना चाहता हूं. टोटल सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस desired profit. So here I write units sold. This is equals to 20,000. Now the variable cost per unit. This is equivalent to 14 rupees. Total variable cost. This is equivalent to number of units sold multiplied with the variable cost. It comes to 2,80,000. We will add fixed cost. Fixed cost is 50,000 plus 10,000. It comes to 60,000. Now I will add the desired profit. This is equals to 2,30,000 rupees. Now I calculate the total amount. This is equals to variable cost plus fixed cost plus desired profit. I press enter. This comes to 5,70,000 rupees. Now we can calculate the new selling price. I write it here, new selling price per unit. This comes to 5,70,000 divided by units sold. This comes to 28 rupees 50 paisa. So student, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उस सबसे पहले हमें एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है. यही एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट बन जाएगा और उसके बाद हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. हमने यहाँ पर न्यू सेल्स क्वांटिटी को भी कैलकुलेट कर दिया और उसी के साथ साथ न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट को भी हमने कैलकुलेट कर दिया. मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह का क्वेश्चन परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.